Let's all welcome the President of Pakistan, Dr. Arif Alvi. And with that, let's all rise for the national anthem of Pakistan, ladies and gentlemen. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. China, Chonghua. Today's event marks the beginning of Chinese manufacturing in Pakistan. And to tell us all about that, I would like to welcome the CEO of Servis Longmarch Tyres Private Limited, Mr. Umar Saeed. Please welcome. 70 years. My grandfather started this group in 1950, and he'd be proud of this achievement, which I think is built on all the stepping stones from perhaps everything we've done in the last 50, 60 years has been built to come to where we are today, which is this great institution we think we built together with our Chinese friends. Pakistan is now in the league of emerging markets, moving from low-income to middle-income state. Economic prospects depend crucially on Pakistan accelerating the pace and implementing across-the-board economic reforms, as well as positioning itself to face growing global and regional competition while harnessing the new economic reality and relations. First, it's a project that is dedicated towards exports. Not only is it dedicated towards exports, it is going to diversify our export base. The bulk of our exports come from one particular sector. From Mr. Li Qingwen, the chairman of Longmarch Tyres China, via video link. 也代表中国浪马轮胎公司有限责任公司的全体员工，对合资工程的圆满过程表示最热烈的祝贺。 Long may this friendship and partnership prosper. And with that, ladies and gentlemen, I will request our chief guest, the President of Pakistan, and all the gentlemen on stage to please join us for the unveiling of the plaque, which marks this occasion and this wonderful beginning. मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से जो दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स वेलकम कर रहा है और अपनी तैयारी कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन के एतबार से और तरक्की के हवाले से। जब मैं नेशनल असेंबली में 2013 से 18 तक था तो कई एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे मैंने देखे जिसमें सबसे अमंग द थिंग्स विच वर बीइंग स्मगल्ड इनटू पाकिस्तान सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जो थी वो टायर्स की थी। तो मैं सबसे ये कहता था कि भाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, ये स्मगलिंग का काम कम भी हो और ज़ाहिर है पॉलिसीज़ ऐसी बनाओ कि स्मगलिंग नहीं हो, क्योंकि इतने लंबे बॉर्डर्स को बाकायदा स्मगलिंग के हवाले से रोकथाम करना कभी कभी मुश्किल होता है। और पिछले दिनों आपने यूरिया के अंदर भी देखा कि जब दुनिया की कीमतें बढ़ गई तो हमारे यहाँ जो सरप्लस था, जो हम एक्सपोर्ट करने के लिए अखबार में इश्तिहारात दे रहे थे, वो अचानक शॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार थे, होल्ड करके उन्होंने बाहर माल भेज दिया। अब जब आप खुद टायर बनाने लगेंगे और इतने बड़े पैमाने पर, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने बस और ट्रक रेडियल टायर्स टेक्नोलॉजी के अंदर खुद कफील भी हो जाएगा। मगर उसके अलावा भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती चली जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद ट्रिमेंडस कंग्रेचुलेशंस फॉर एन एक्सेलेंट वर्क हियर, establishing this factory, diversifying business, giving employment, showing by word of mouth to our Chinese possible other investors that we have done a fantastic job of cooperation and creating ease of business. Pakistan, Cheen dosti zindabad, Pakistan paindabad.